Hello everyone. So in this video, I'll discuss about how you are supposed to approach a mock paper. So if you are preparing for any of the competitive exam and the mock paper is of objective type. So I'll tell you how you are supposed to attempt it. Okay, before I'll solve the paper as well, but before solving, I need to tell you how you are supposed to approach. So in most of the papers, what happens is you get four different sets of question paper. Suppose A, B, C, D. And in most of the paper, so in all the paper, the questions are same. It's just that they are shuffled in such a manner that so that it is difficult to cheat. Now, what could happen is A. So suppose if you're talking about 100 questions in a question paper, 15 to 20 questions would be tough. So it could be the case for A that the tough questions are at the end. For B, it could be the case that the tough questions are in between. For C, it could be the case that the tough questions are in the starting only. So if C starts the paper from the first question itself, the first initial 10 questions would be tough, which is tough for every other set as well. So it would become, what students do is they panic. They panic because it becomes, they lose the confidence in the first 10 questions only. And this initial 10 questions or the initial 10 minutes decide whether a student who has thoroughly studied would be able to clear the exam or not, because he loses the confidence in such a manner that he starts questioning himself. So I would suggest different approaches that you can approach. First thing is you can just go through the paper in the initial 2-3 minutes, and then you can, suppose there are 15 pages of the question paper, and you can accordingly rank these pages depending on the easiness according to you. So suppose I find this paper the most easiest, so I'll on the top of it I'll put 1. Then if I see this part of the paper has easier question, then 2, then 3, then 4, then 5, then 6, and accordingly I'll start from 1, then 2, then 3, then 4, 5, then 6. This will make sure I'll cover the easier part first, and this would boost my confidence. So even in 1 hour, if you are able to complete 40 to 45 questions, and these are the easier questions, so it would make sense because you would get a decent score for sure. Okay, one of the approaches is this, and the other approach is you can start with the topics you are comfortable with. So suppose if you're talking about public finance or macroeconomics, so macroeconomics or numericals, so numericals of micro. So what you can do is you can just, by going through the paper, you will get to know which particular pages have questions related to macro and micro. So you can start solving from there. This would help you in solving the question. This will actually boost your confidence and would make sure you clear the paper. So suppose if you're solving a question like this, suppose 8, and if you don't know this question, just cross it out. Because if you don't cross it out, you are bound to read that question again and again, and this will take a lot of time for you. So you are supposed to delete. It would be more relevant if you delete this on the paper itself. This would make sure that you don't waste your time on reading the question again and again. Or you can just put a cross mark here that you are not going to attempt this if this is too much difficult. Okay, now starting with the paper, I'll discuss some of the techniques that is required as well to solve the questions. So how we are supposed to eliminate and all. Okay, now starting with the first question. If a farmer sells wheat to a miller for 600, so the farmer is selling the wheat at 600, and the miller sells flour to baker for 800, then miller is selling to baker for 800, farmer to miller, then the baker sells bread to consumer for 1300. Then we are supposed to find the total value added. So initial, this is the production, and now the farmer is selling it to miller for 800. So 200 would be the value added in this case. Now
we are supposed to find the total value added, 200 by him, and then the baker is selling it to 1300 to the consumer. So plus 500. So the total value added is 700. Now, second question, which investment is made without any reference to the level of income or profits? So you must have studied the consumption function as well, where A, which is not dependent on income level, is autonomous consumption. So they have discussed about this thing only. So it would be autonomous, right? And at the end of the question, at the end of the paper, what we'll do is we'll see how many easy questions were there and how many tough questions were there. And medium, okay. So 3 sets of questions. So we'll check what the difficulty level of the paper was. Okay. Now, the value of national income adjusted for inflation. Value of national income adjusted for inflation is called. You must have studied about nominal GDP, which is equals to real GDP. Nominal GDP by price level is equals to real GDP. So P into Y is the nominal GDP. So now if the national income is adjusted for the price level, we'll get real national income. Okay. Now moving on to the next part. Which of the following fiscal policy measures would be suitable for addressing a deflationary gap or deficient demand? So the question is saying that in the economy there is deficient demand, that is there is inadequate demand. So we know Y equals to C plus I plus G plus NX. The government can, if the government increase the government expenditure, so this is the aggregate demand, which is low. So the government can either increase the government expenditure, investment, consumption or net exports. Now increase in government expenditure. This makes sense because this would lead to increase in AD. Reduction in taxes is also right, because if the taxes are reduced, the disposable income, YD is Y minus T, would increase and so would aggregate demand. So if 2 of them are right, we don't need to think about the third. All of them would be correct. Okay. Now moving on to the next question. The value of investment multiplier when savings function is given by this. Now, for a savings function, S equals to minus A plus MPS into Y. So we have MPS equals to 0.2. MPC would become 0.8. We know the value of the multiplier is 1 upon MPS, or which is equals to 1 upon 1 minus MPC. So this is 1 upon 0.25. So if you know this formula, it is very easy to solve this question. So the answer is 5. Now looking at D part, at the 6th question, what could be the cause of increase in aggregate demand within an economy? So if they are writing within an economy, exports and imports are already cancelled out because they come from outside the economy. So aggregate demand is C plus I plus G plus NX. NX is already removed. This is 0. So we are talking about increase in aggregate demand. Rise in investment expenditure, okay. Decrease in government expenditure. Decrease in government expenditure would reduce the aggregate demand. So this cannot be right. So the answer is C. Okay. Now coming on to the 7th part, 7th question. Which of the following will cause a leakage in the national income of an economy? Decrease in expenditure. Okay, so C plus I plus G plus NX. G plus NX. Okay. If there is increase in imports, decrease in taxation would lead to increased level of income. If the income level is increasing, then this won't be a leakage. So B is eliminated. Okay. Now decrease in expenditure. Decrease, if the expenditure level falls, it could fall due to any of these factors. Increase in imports. If the imports are increasing, aggregate demand would fall, which is like a leakage only.
and decrease in expenditure is also there. So we have both A and C. Because if expenditure falls, it's like a leakage, क्योंकि वो multiplier effect से नहीं impact हो पाता. Now, the 8th question, the government adopting progressive taxation system to tax people. Progressive taxation, you should know about regressive, progressive, and proportional. On the level of income is an example of which type of public finance. So in progressive taxation, what happens is they charge a higher interest rate, higher tax rate to rich individuals and low tax rate to poor individuals. Or even if the tax is not there, it might be the case that they are giving subsidies, which is negative of tax. That is, they are paying money to the poor. This is a function of allocative. This is an allocative function because the government gets the revenue from taxing the rich and then pays the revenue to the poor individuals in form of subsidies. Okay, now the increase in cost of food, fuel, and fertilizers in countries due to production of weapons in the war between Russia and Ukraine results in which type of externality? First thing is, since it is confined to production, so it would be either positive or negative production externality. So consumption externality is being eliminated. Now because the cost has increased, this cannot be a positive externality. So this is a negative externality. Okay, I hope this is clear. Okay, Mr. Amit, a stock market trader, through insider information, comes to know that share price of X Limited is likely to go up in the future. So he purchases the shares to make a gain by selling them later at higher prices. The thing is, अमित को ऑलरेडी इंसाइडर इन्फॉर्मेशन है जो मार्केट में बाकी सारे ट्रेडर्स को नहीं है. तो उसने सारे कुछ पर्टिकुलर शेयर उस कंपनी के खरीदे जो उसको पता है कि प्राइस बढ़ने वाला है. तो दिस इज अ केस ऑफ एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन, क्योंकि उसको ज़्यादा पता है, एक्स्ट्रा ही हैज़ मोर नॉलेज एज कम्पेयर टू अदर्स, और जो उसके एक्शन है वो इम्पैक्ट कर रही है. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द MSP? देखो इस क्वेश्चन में MSP वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ प्राइस सीलिंग, MSP वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ प्राइस फ्लोरिंग. बाकी ऑप्शंस पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है. नॉट ट्रू और ये दोनों ऑपोजिट हैं, तो इन दोनों में से एक गलत होगा. तो ये तो ऑप्शन मतलब नॉट ट्रू, तो ये ट्रू है, तो ये अपने आप एलिमिनेट हो गए. MSP वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ प्राइस सीलिंग. डिमांड सप्लाई MSP हमेशा ऊपर लगता है, तो ये प्राइस फ्लोरिंग होता है. तो नॉट ट्रू ए हो गया. ठीक है. विच कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व अ वन शॉट इंजेक्शन ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इनटू अ डिप्रेस्ड इकोनॉमी with the aim of boosting business confidence and encouraging larger private investment? Okay, so pump priming is printing of money, deficit financing is the government spent and that revenue is being like taken back by in the form by printing of notes by RBI. So this is public spending. Okay. 13th question, the per capita income in country Y increased from 50 to 65,000, while the per capita consumption increased from 37,500 to 48,700. Calculate the spending multiplier for the economy. So spending multiplier would be 1 by 1 minus MPC, and MPC is nothing but change in C by change in Y. So change in C is 12,000. This is 48,750 minus 37,500. 51,1. 11,250 upon 15,000. Okay, I'll just get a calculator and solve this. Okay. So with the help of this, we'll find the value of MPC, exact value of MPC, right? And then we'll put this in the multiplier formula, which I have already written. So 1100
250 divided by 1500 gives 0.75. So this is giving 0.75. So we know MPC is 0.75. So the value of the multiplier is this. This becomes 1 minus 0.75, which is 1 by 0.254. So you must know this formula. This is an easy formula to remember. Which of the following is used to counter recession as part of expansionary fiscal policy? Okay. So now they're talking about fiscal policy. Increase in interest rate. If I increases, investment would fall. So this would lead to fall in aggregate demand. तो ये तो नहीं हो सकता. A हट गया. Now decrease in taxes. Now if the taxes are reduced, the disposable income of the consumer increases, YD increases, and so consumption also increases. So this is right. And now we, so C तो नहीं हो सकता, only C, क्योंकि B सही है तो B या both B and C. Now deficit financing. Deficit financing is also a measure to increase the aggregate demand. So we would have D. Okay. 15. Mr. A, who is self-employed, decided to keep more money in his savings account considering the prevailing economic and political conditions. What is the motive for such a move by A? So this is the Keynes money function, related to Keynes money function, where there are three purposes: transaction, speculative and precautionary. So conservative तो हट गया. But वो पैसा क्यों रख रहा है? Because of economic and political conditions. So this becomes because of precautionary motive. Now 16th question. Which of the following is true with regards to liquidity trap? We have already discussed liquidity trap is a scenario which occurs when the interest rate is very low and speculative demand is parallel to excesses. Desire to hold bond is infinity. So desire to hold money is infinity. Ineffective monetary policy and speculative demand is parallel. So we have the answers D. Sorry, this is the answer. Among the following identified by Friedman, which one is not one of the four determinants of aggregate demand for money? So average return on 5 assets it is, which is not one. Price level it, inflation, but forex trade won't impact. So think from this logic. If you want to hold certain money, would it matter on how much India is exporting or importing a particular good? Okay. Now, the 18th question. According to whom rational behavior induces individual to hold an optimally structured wealth portfolio which is comprised of both bonds and money? So if you have studied about this, it is Baumel's theory, because Keynes states you need to put your money either in bonds or in money itself. But Baumel suggests that you need to have both. Okay. Which of the following monetary instruments are indirect instruments of monetary policy? So here they are talking about the indirect instruments of monetary policy. Open market operations, repo rate, all of them are monetary instruments only. But this cash reserve ratio is direct. So we have the answer B and C. Which of the following is a disadvantage of international trade? Increased choice for consumer. This cannot be a disadvantage. Risk of dependence on imports. This can be. Increased specialization. No. This is a good thing. So risk of dependence on imports. Which of the following is an example of local content requirement? So this might be a new term. So local content requirement means, so now if USA is planning to start the production of, suppose, mobile phones in India. Now the Indian government can put a local content requirement condition on it, that is 10% of the material should come from Indian firms. So this is a local content requirement condition. So this would make sense. A requirement that a certain percentage of a product be produced domestically. Okay.
Now, moving to the next question. Which of the following measures involve total ban imposed by government on import or export of some or all commodities to particular country or regions for a particular or indefinite period? So what they're trying to say is a ban is being imposed on the countries that they cannot import or export anything. This is a case of embargoes, and this was being imposed on Russia due to Russia-Ukraine war. Okay. And even Russia imposed the embargoes on different countries. Now, the central bank of a country is concerned about high level of household debt and its potential impact on the economy. Which of the following action can it take to address the issue? Now, because there is high level of household debt, so lending is more. So they need to reduce the lending. Discourage borrowing, reduce lending. Increase lending cannot be there, encourage borrowing cannot be there. Now, borrowing they cannot control, right? The central bank cannot control the borrowing. They can control the lending through controlling the commercial banks. So the answer would be A. Now, ONGC Videsh Limited has been incorporated by its parent entity ONGC for oil and gas acreage, involving exploration, development and production of oil and gas outside India. Okay, so basically the ONGC Videsh Limited has been incorporated by its parent entity. Which type of foreign investment is it? Okay, brownfield investment is, सपोज एक हाईवे है, उसका टोल कलेक्ट करना है, हाईवे बन रखा है, बस टोल कलेक्ट करने के लिए करना है. ग्रीन फील्ड होता है जो बिल्कुल स्टार्टिंग से होता है, तो ये तो ऑप्शन हट गया. नाउ अब एज दे हैव एक्वायर्ड इट, तो इट मेक सेंस दैट इट वुड बी अ gas outside India for oil and gas involving exploration, development and production of oil and gas outside. This would be this shouldn't be a licensing thing. This could be joint venture or an brownfield investment. But most probably it would be a joint venture. But since they have incorporated it, so it would be a subsidiary. The firm would be a subsidiary. So they should have given this option. Well, it is not related to licensing. Okay. The first order condition for the profit of a firm to be maximum. So you must know this. The first order condition is when marginal revenue equals to marginal cost. This is a very basic question. You're not supposed to mark this wrong. Okay. Now coming to the next question. Which of the following is not one of the features of new trade policy theory by Paul Krugman? Countries which trade in similar goods are natural trade partners. ठीक है, he has mentioned this. It is based on labor theory of value. Network effects as means of engaging in international trade. This was given by Ricardo. His theory focuses on economies of scale. So this ठीक है, since you might not have studied this is a tough question. But okay, now you will know what the answer to this is. Okay, now which organization is accountable for calculating the gross domestic product of India? Indian Statistical Institute doesn't do this. It's a proper university for master students, so they don't do it. RBI doesn't do it. Ministry of Commerce and Industry. So we have a lot of ministries. Then it can be the case that other ministries are doing it. Why have they mentioned this only? So it is National Statistical Office. The survival and success of any business depends on sound decisions. This is fairly easy. In economics, generally the classification of the markets is made on the basis of time. Okay, geographical area, so we know it is there. So D cannot be there, only A cannot be there. Now time, it would also depend on time, right? So it is C. During an expansion phase of the business cycle, which of the following is likely to occur? So
एक्सपेंशन हो रहा है तो बेसिकली y इक्वल्स टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स, ये सारी टर्म्स बढ़ रही है मिला के। डिक्रीज इन कंज्यूमर स्पेंडिंग नॉट पॉसिबल बिकॉज एक्सपेंशन हो रहा है तो ग्रोथ ही होगी। इंक्रीज इन बिजनेस बैंकरप्टेंसीज, मतलब बिजनेस बंद हो रहे हैं, बिजनेस बंद तो रिसेशन में होंगे, एक्सपेंशन में क्यों होंगे। इंक्रीज इन जॉब अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ये तो नहीं पॉसिबल क्योंकि ये सारे एलिमेंट्स तो बढ़ रहे हैं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल इज कैरेक्टराइज बाय इंक्रीजिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी, राइजिंग एम्प्लॉयमेंट एंड ग्रोइंग कंज्यूमर स्पेंडिंग। Recession truth cannot be there, so you might be confused with recovery or expansion, which makes sense, but ठीक है, the answer is expansion. Now talking about post-war reconstruction, it will push the economy to slow down. Why would it push it? Because if we are focusing on the reconstruction, we want the economy to expand. तो आगे पढ़ने की नीड भी नहीं. Will cause pickup in economic activities. Okay, makes sense. As the reconstruction pushes up the effective demand and in turn employment and income. Okay, this makes sense. Can cause boom or recession. It cannot cause recession because it's... So the answer is B. Dash is concerned with welfare proposition. So normative economics is concerned with welfare proposition. Okay. Under next question, under monopoly, selling costs are incurred for persuading customers for not buying competitors' product. Now we have a monopoly, so there is no competition, right? There is no competitor, so this cannot be right. Okay. Selling cost, you make advertisement, just it could be due to for informative purpose, but at the end of the day, the goal is to promote the sales of the good. Okay, which of the following is incorrect formula? TC equals to AC by Q into Q, this is right. Summation MC plus TFC. Summation MC is TVC plus TFC is TC. So this is also right. Okay, we are supposed to find the incorrect one. Summation MC equals to TVC and summation MC equals to TC. So we know either one of them should be wrong, right? And we know summation MC is TVC, so this is the wrong one. Okay. The diminishing returns are due to... Diminishing returns are when you increase one factor of production, the marginal product of the other factors increases at a decreasing rate. And this is because of internal economies. It is specific to a firm. So diminishing return, internal diseconomies. So it is not related to external. देखो यहाँ पे एक और तरीका बता दो कैसे सॉल्व करते हैं. इंटरनल तो एक्सटर्नल हट गया. नाउ डिसइकोनॉमीज तो इकोनॉमीज हट गया. ठीक है. एंड इंक्रीजिंग रिटर्न्स आर ड्यू टू एक्सटर्नल. ओके, अब हमारे पास ये बचा है. अभी दोनों ऑपोजिट चीज़ें बता रहे हैं. इंटरनल डिसइकोनॉमीज, डिमिनिशिंग रिटर्न्स आर ड्यू टू. ठीक है, हाँ, सेम लॉजिक से. अब यहाँ इंटरनल, ये एक्सटर्नल है, ये भी हट गया, तो वी आर लेफ्ट विद दिस. अब देखो इसका सेंस भी बन रहा है. डिमिनिशिंग रिटर्न्स आर ड्यू टू इंटरनल डिसइकोनॉमीज क्योंकि कॉस्ट बढ़ रही है, एंड इंक्रीजिंग रिटर्न्स आर ड्यू टू इंटरनल इकोनॉमीज. ये पॉजिटिव चीज़ होगी. तो 36 का ए. द किंग डिमांड कर्व थ्योरी एक्सप्लेन्स दैट इवन व्हेन द डिमांड कंडीशंस चेंज, सो इवन इफ द डिमांड चेंजेस, दिस इज मार्जिनल रेवेन्यू. यहाँ से ऐसे आता है, नीचे तक जाता है MR. दिस इज डिमांड. इवन इफ द डिमांड चेंज, द प्राइस रिमेन स्टेबल. क्योंकि डिमांड चेंज भी होती है तब भी मार्जिनल रेवेन्यू ऐसे आता है कि मार्जिनल कॉस्ट को यहीं पे ही कट कर रहा होता है. तो प्राइस रिमेन्स स्टेबल. तो इसका हो गया बी. अब इसमें वो लॉजिक नहीं लगा. हाँ ठीक है, ये सही. इफ अमेरिकन्स टुडे फॉर एग्जाम्पल वर टू कंटेंट to live at the level of the Indian middle class people,
all their wants would be fully satisfied with their available resources and capacity to produce. So basically, Americans are demanding more. So the following conclusion can be made: the possession of goods and services by US to exceed their wants. No. The affluent and developed countries of US and West face the problem of scarcity even today. Okay, now if you'll read all of them, B is the most suitable. And it is a general theory. If the length of the answer is very high, so that would be the possible answer. Okay, a firm reaches a break-even point. Break-even point is when profit is zero. That is, the total revenue equals to total cost. So you are earning nothing. Marginal revenue cuts the horizontal axis. Marginal curve intersects the average variable cost. Total revenue equals total variable cost. Total revenue and total cost are equal. 40th question. In an economy, C equals to this, I equals to this, Y equals to this. So they are talking about a two-sector economy. This is fairly easy. 300 plus 0.5Y plus 600. So 0.5Y equals to 900. So Y becomes 1800. This is fairly easy. When investment in an economy increases from 10,000 to 14,000. So what they are giving is change in I is 4,000. And as a result of this, national income rises from 80,000 to 90,000, 92,000. So change in Y is 12,000. They are asking what is the investment multiplier. Investment multiplier value is change in Y by change in I. So this is 12,000 by 4,000, which is 3. Investment multiplier suggests by how much the income level increases if investment increases by 1 rupee. Okay, calculate national income from the following data. C, Y equals to C plus I plus G plus NX. So this is 1000 plus 500. 1000 plus 500. G is 200. Plus net exports is exports minus imports. So plus 200 minus 400. So this cancels out. So this is 1500. This is also quite easy. Firms cooperate with each other in determining price or output or both. It is a feature of. Now if they are collaborating with each other, cooperating, so non-collusive का तो सेंस नहीं बनता, collusive ही हुआ ना, क्योंकि साथ में collude कर रहे हैं वो. Okay. 44th question. Microeconomics deals primarily with. देखो सेम लॉजिक से करेंगे. कंपेरेटिव 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 तो डायनामिक हट गया. जनरल पार्शल 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 तो जनरल हट गया, सबसे यूनिक था. एंड पॉजिटिव 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 नॉर्मेटिव नॉर्मेटिव हट गया, तो आंसर डी हो गया. क्योंकि वो ठीक है और सेंस भी बनता है. कंपेरेटिव स्टैटिस्टिक्स होते हैं, पार्शियल इक्विलिब्रियम होता है और पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होता है. When both the price of a substitute and the price of a complement of a commodity X rise. अगर सपोज X है शुगर, सॉरी शुगर नहीं टी, एंड Y है कॉफ़ी. अब अगर प्राइस ऑफ कॉफ़ी बढ़ जाता है, प्राइस ऑफ कॉफ़ी बढ़ेगा मतलब कॉफ़ी हमारे लिए और महंगी हो रही है, विल कंज्यूम मोर ऑफ X. ठीक है. अब नाउ चाय के लिए वी नीड sugar. Now the price of and they are complements क्योंकि दोनों साथ में चाहिए. And if price of sugar increases, ठीक है, प्राइस अगर शुगर का बढ़ गया तो चाय की डिमांड कम हो जाएगी क्योंकि चाय भी महंगी हो जाएगी. अब तो बढ़ भी सकती है, फॉल भी हो सकती है, क्योंकि वो डिपेंड करेगा कि शुगर की वजह से डिमांड पे कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है और कॉफ़ी की वजह से डिमांड पे, कॉफ़ी के प्राइस की वजह से डिमांड तो बढ़ेगी, शुगर की वजह से डिमांड कम होगी. अब ये अगर 10 से बढ़ी है 10 से कम होगी तो ये बराबर हो गए. ये 10 से बढ़ा बट ये 5 से कम हुआ तो ये टोटल डिमांड बढ़ गई. तो सब कुछ पॉसिबल है इस केस में. ओके. अ कंज्यूमर हु इज़ बिलो द पर्सनल बजट लाइन, मतलब यहाँ पे कही है, सपोज ये पॉइंट ले लो 0,0. इसका मतलब वो सब कुछ तो नहीं खर्च कर रहा अपना पैसा. यहाँ पे भी है तो उसकी सारी, अगर अपना सारा पैसा खर्च करता तो वो बजट लाइन पे होता.
so is not spending all his personal income. Okay. Now when law of diminishing returns begin to operate, the TVC curves begins to, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न मतलब तुम्हारा आउटपुट जैसे जैसे तुम लेबर बढ़ा रहे हो, आउटपुट उतने से नहीं बढ़ रहा, तो मतलब टोटल कॉस्ट ज़्यादा से बढ़ रही होगी. सो इट इंक्रीजेस एट अ, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स आ रहे तो मतलब हर बार कम कम प्रोड्यूस हो रहा है, तो इट इंक्रीजेज एट अ, राइज एट एन इंक्रीजिंग रेट. ओके. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल कंडीशन ऑफ प्योर कॉम्पिटिशन. प्योर कॉम्पिटिशन में क्या क्या होता था, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट की क्वालिटी सेम होती है, ये भी होता है, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट ये भी होता है, एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ये तो नहीं होता, ये ऐसी तो कोई कंडीशन थी नहीं. तो 48 का डी हो गया. 49 का, इन द केस ऑफ एन इन्फीरियर गुड द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ अ गुड इज, इट इज़ नेगेटिव. ठीक है. ग्रेटर देन 0 होती है नॉर्मल में और ग्रेटर देन 1 होती है लग्जरी में. इन्फीरियर गुड्स वो गुड होते हैं जिनकी हमारी इनकम बढ़ती है, हम उनकी कंजम्पशन कम कर देते हैं. तो सपोज इफ़ आई ट्रैवल बाय बस राइट नाउ एंड मेरी की लॉटरी लगी या मेरी बहुत बढ़िया जॉब लग गई, तो आई स्विच फ्रॉम बस टू सपोज कैब और कार. सो द बस राइड फॉर मी वुड बी एन इन्फीरियर गुड देन. ओके. The share of concessional debt in total external debt of India has, ठीक है, most of you might not have any idea of it, so it has actually reduced. Okay. The Indian industry faced the process of retrogression and deceleration because of, कह रहे बेसिकली इंडियन इंडस्ट्री इतना ग्रोथ क्यों नहीं कर पाई, अनसेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीकल्चर, बिकॉज एग्रीकल्चर अगर ग्रो नहीं करेगा दैट वुड लीड टू रिड्यूस डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स. स्लैकनिंग ऑफ रियल इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक सेक्टर मतलब पब्लिक सेक्टर में उतनी इन्वेस्टमेंट नहीं हुई, एंड नैरो मार्केट फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स स्पेशली इन रूरल एरियाज. तो ये ऑल ऑफ देम आर मेकिंग सेंस. ओके. डैश इज एन इम्प्लिसिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. तो बेसिकली वेजेस ऑफ द लेबर आर एन इम्प्लिसिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. ओके. एक्सपोर्ट लेट ग्रोथ स्ट्रैटेजी मतलब जैसे होता था ना y=c+i+g+nx, तो क्या कह रहे हैं, इस पे फोकस करो, x-m पे x को ज़्यादा करो. तो इट डज नॉट इंक्लूड एक्सपोर्ट ओरिएंटेड आउटवर्ड ओरिएंटेड ग्रोथ, ये तो ठीक है. एक्सपोर्ट प्रमोशन हो रहा है, इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शन ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता. एम्फसाइजिंग कंपैरेटिव एडवांटेज. अब इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शन में क्या दिक्कत है, क्योंकि अब जो एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं वो ऑलरेडी उनके इनपुट्स इंपोर्ट कर रहे हैं हम, तो इसका चांस सबसे ज़्यादा है. मतलब अगर तुम्हें गेस भी करना होगा तो इट मेक सेंस दैट यू गेस ऑन दिस थिंग. ओके. नाउ in both the Chamberlain and the King demand curve models, the oligopolist, the thing is the oligopolists know that they are dependent. That both of them are dependent to each other. Do not collude. Tend to they keep price constant. We know this. अगर हमें इसमें बिल्कुल भी डाउट है तो अगर ये दोनों सही हो गए तो इट वुड बी डी ओनली. ठीक है. Now, डैश डिपिक्ट्स कंप्लीट पिक्चर ऑफ कंज्यूमर्स टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस. ये सब ने पढ़ रखा होगा. दिस इज इन डिफरेंस मैप ओनली. नाउ 56 budgetary deficit can be expressed as the excess of public expenditure over public revenue, the sum of deficit on revenue and deficit on capital account. This is okay. This is right. The portion of government which is financed through, basically this is borrowings only. So all of them are right. So it would be D. The degree of monopoly power. Okay, this is a new concept. We have a learner's index for it as well, which is P minus MC by price. So P minus MC gives you the monopoly power, marginal cost and the price.
Okay, all other are different. The marginal curve cuts the AVC and ATC curves. So suppose we have AVC, ATC. This won't touch exactly, but this would be very close. So it cuts. So it cuts at different points, ठीक है, at the falling parts of each cut. So this is a property that it cuts at the minimum point, because if MC is less than AC, AC falls, and when MC is greater than AC, AC बढ़ेगा. तो देखो, MC अगर कम चल रहा है AC से तो AC गिरे जा रहा है, बट MC जैसे ही AC से बड़ा होगा तो AC बढ़ेगा. तो ये मिनिमम पॉइंट ही तो बचा जहाँ MC उसको कट करेगा, क्योंकि उससे पहले तो वो गिरे जा रहा था. ये MC है, ये AC है, क्योंकि MC इससे नीचे था इस क्वांटिटी तक, तो AC गिर रहा था. ये रेड से कर रहा हूँ AC को. AC गिर रहा था थ्रू आउट, क्योंकि MC उससे नीचे था. ये वैल्यू थी. अगर क्वांटिटी 2 ली, AC आया 5, MC आया 2. बट इस क्वांटिटी के बाद से मार्जिनल कॉस्ट तो बहुत ज़्यादा से बढ़ गया, बट एवरेज कॉस्ट भी फिर बढ़ने लग जाएगा. तो ये मिनिमम पॉइंट हो जाता है. इसका हो गया C. ठीक है. फर्म सप्लाई कर्व इज द डैश पार्ट, इज द राइजिंग पार्ट ऑफ द AC कर्व. नहीं होता, हमेशा मार्जिनल कॉस्ट होता है. तो ये दोनों तो हट गए. मार्जिनल कॉस्ट का पार्ट होता है और जो AVC के से ऊपर का पार्ट होता है, राइजिंग पार्ट. ठीक है. तो दिस इज C. अंडर मोनोपोली कंडीशन द फर्म इज एबल टू सेल मोर यूनिट्स ऑफ आउटपुट एट द सेम प्राइस, एट हायर प्राइस, एट कॉन्स्टेंट प्राइस, एट कॉन्स्टेंट प्राइस. ठीक है. ये दोनों तो लोअर प्राइस पे ही तो ज़्यादा सेल कर पाएंगे. अगर ज़्यादा प्राइस करेंगे तो ज़्यादा सेल नहीं कर पाएंगे. ठीक है. ओके. तो ये क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि इसमें ऑप्शंस ही है. तो ये दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग. नाउ लुकिंग एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज हेजिंग. हेजिंग क्या होता है? अगर सपोज वी आर प्लेसिंग अ बेट, अगर मैंने ऑस्ट्रेलिया इंडिया का मैच चल रहा है, आई हैव प्लेस द बेट ऑन इंडिया. ठीक है. एंड नाउ suppose Australia was favorite and I placed the bet on India. Now suppose India starts performing well, the return from Australia would also increase. So suppose India पे starting में 100 पे मिल रहे थे 800. Okay. Now I put ₹100 on India. So I'm getting 800 if India wins. And on Australia it was on 100 you will get 110. So basically 10% return. Now what they're saying is, now the odds have changed in such a manner that on Australia you are getting 200 and on India you are getting the same rate. Now what they do is, hedging is a strategy कि I'll invest 50 on Australia as well. अगर थोड़ा एक दिन बाद ऐसा रिजल्ट आ रहा है कि ये प्राइस हो गया, तो I'll invest 50 on Australia, ताकि मुझे 50 से 100 तो मिल जाएगा अगर ऑस्ट्रेलिया जीती, बट इंडिया जीती तो आई विल गेट 800 माइनस जो ये मैंने 50 इस पे लगा दिया 750. तो इसको क्या, दिस इज कॉल्ड हेजिंग द रिस्क. मतलब रिस्क को थोड़ा तुमने मिटिगेट कर दिया. ठीक है. तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिस्क रिलेटेड टू वेरिएशन इज प्राइम मूवमेंट ऑफ एन एसेट. व्हाट इज इकोनॉमिक प्लानिंग? इट रेफर्स टू अ सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी. नहीं, इकोनॉमिक प्लानिंग तो बहुत सारी जगह पे हो जाती है. हम अपने घर में भी करते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग, बजट की, मतलब कैसे हमें खर्च करना है. इट रेफर्स द प्लानिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन. नहीं, मीन्स डेवलपमेंट इन द सेलर्स मार्केट. कुछ सेंस नहीं बन रहा. अ प्रोसेस थ्रू विच टारगेट्स आर बीइंग अचीव्ड एज पर नीड एंड मीन्स ऑफ द इकोनॉमी. ठीक है. व्हाट इज द मेरिट ऑफ कैपिटलिज्म? इट प्रमोट सेल्फ इंटरेस्ट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ. ठीक है, सेल्फ इंटरेस्ट तो होता है. इट लीड्स इकोनॉमिक बैलेंस इन द कंट्री. ये तो नहीं होता. इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ तो नहीं होता. तो सेल्फ इंटरेस्ट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ.
एग्रेरियन रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर ब्रॉट, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स भी आए थे, टेक्निकल भी आए, लैंड रिफॉर्म्स भी आए। मोस्टली तो वैसे मेजरली तो लैंड रिफॉर्म्स थे, बट इंस्टीट्यूशनल भी आए थोड़े बहुत। एक केसी अप्पा करके थे बंदे, वो बहुत ज़्यादा डेडिकेटेडली उन्होंने काफ़ी रिफॉर्म्स पे काम करा। एक महात्मा गांधी के आइडल वो थे, उनके पाथ को फॉलो करते थे। ठीक है, तो इसका डी हो जाएगा। इंटरेस्ट रेट पॉलिसी इज अ पार्ट ऑफ फिजिकल पॉलिसी। क्या करता है? देखो, फिजिकल पॉलिसी तो गवर्नमेंट टैक्स या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर या टैक्सेस पे फोकस करता है, नहीं हो सकता। इंडस्ट्रियल पॉलिसी तो इंटरेस्ट रेट पे फोकस ही नहीं करती। मॉनेटरी पॉलिसी रेपो रेट को इन्फ्लुएंस करती है, ताकि जो इनका टारगेट है 4 ± 2% का, उसको अचीव कर सके। नाउ व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ द टर्म नीति इन नीति आयोग? तो ये सबको पता होना चाहिए, 2015 में जनवरी में आया था फर्स्ट। दिस इज नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ओके, ओके। वन ऑफ द रीजन mentioned below doesn't justify imposition of tariffs. अब टैरिफ कब नहीं लगनी चाहिए? बीओपी डेफिसिट कर्व करने में होता है, बिल्कुल होता है। रेजेस गवर्नमेंट रेवेन्यू, ये भी होता है, बट ये रीज़न हो सकता है या नहीं? इट विल एनहांसेस कंज्यूमर सोवरेनिटी। इसका कुछ सेंस नहीं बन रहा। इट रेजेस गवर्नमेंट रेवेन्यू हो सकता है। इट इज़ यूज टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, ये भी होता है, क्योंकि टैरिफ लगाते इसलिए ताकि फॉरेन फर्म्स यहाँ पे आके पैसा ना डालने लग जाए, मतलब यहाँ की मार्केट को कैप्चर ना कर ले, हमारे प्रोड्यूसर्स को ऐसा ना हो कि कुछ ना मिले। अब 68th क्वेश्चन इज़ वेरी बेसिक। डैश रेफर्स टू दैट पोर्शन ऑफ टोटल डिपॉजिट दैट अ कमर्शियल बैंक इज रिक्वायर्ड टू कीप विद आरबीआई। तो कमर्शियल बैंक कहाँ रख रहा है? आरबीआई के पास। कंपल्सरी रिजर्व रेशियो नहीं होता ये, इट इज़ कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, नाउ विच वन मेक्स जीडीपी एन इम्प्रॉपर इंडेक्स ऑफ वेलफेयर? नॉन मॉनिटरी ट्रांजेक्शन, ये भी होती है। एक्सटर्नैलिटीज होती है। कॉम्पोजिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, ये भी तीनों चीज़ें। तो ऑल ऑफ द इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट, जो तुमने लोन ले रखा है, इज ट्रीटेड एज, ये तो गवर्नमेंट ही पे करती है, तो गवर्नमेंट पेमेंट हो गया। मतलब बेसिकली ट्रांसफर पेमेंट भी बोल सकते हैं इसको, बट ट्रांसफर पेमेंट इस सेंस में कि इन रिटर्न उनको कुछ नहीं मिल रहा, ये ऑलरेडी जो लोन दे रखे हैं उसको ही पे कर रहे हैं। आर फिजिकल एंड मॉनिटरी पॉलिसीज ऑपोजिट ऑफ ईच अदर? ये ऑपोजिट नहीं होते, ये कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है, सो व्हाट वी हैव इज, येस दे आर ऑपोजिट टू ईच अदर। कोई भी नेगेटिव टर्म नहीं आएगी कि ऑपोजिट क्यों होंगे। ये नहीं बोल सकते फिजिकल पॉलिसी सुपीरियर टू मॉनिटरी पॉलिसी। These policies are complementary to each other. The level of consumption at which marginal utility of a commodity reaches zero is called. So, this is called a point of satiety. Indifference curve की shape exactly होती ऐसी है. It's like a circle only. But we consider this part of the indifference curve, which means the marginal utility is always positive. इस point पे zero होती है, then it starts falling. Okay. Falling is not a factor affecting price elasticity of demand. प्राइस लेवल तो करेगा। प्रोडक्शन में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? इट डजेंट इम्पैक्ट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। डिमांड पे प्रोडक्शन की कॉस्ट का कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, तो ये हो गया, क्योंकि नॉट अ फैक्टर था। अंडर मोनोपोली कंडीशन द फर्म इज एबल टू सेल मोर यूनिट्स ऑफ आउटपुट, they would be able to set more units at a lower price only. ठीक है, this is the same question which is being repeated. False. Which of the following statement is false? When MP rises, total variable cost increases at an increasing rate. तो MP rise हो रहा है तो total variable cost को तो fall होना चाहिए, मतलब increase होना चाहिए decreasing rate पे। When okay, so हाँ, this is false की बात कर रहे थे, तो यही हो गया, क्योंकि when MP rises, TVC increases at a diminishing rate. When MP becomes constant, TVC increases at a constant rate. When MP falls, TVC increases at an increasing rate. ठीक है, A1. A firm can earn only normal profits in the long run. सिर्फ लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट्स कर पा रहा है, इट्स एन इम्प्लीकेशन ऑफ फॉलोइंग फीचर। अब अगर प्रॉफिट्स मार्केट एक इंडस्ट्री में, सपोज मोमोज इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं हम, उसमें प्रॉफिट बहुत ज़्यादा थे, तो होता क्या है,
क्योंकि फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट है तो बहुत सारी फर्म्स और आने लग जाती है, तो मोमोज की सप्लाई बढ़ गई। पहले अगर पूरे रोहिणी में एक ही स्टॉल था, नाउ दे हैव 20, दे मस्ट हैव क्लोज टू 1000 स्टॉल्स। तो एंट्री, फ्री एंट्री एंड एग्जिट था ना, इस चक्कर में हो जाता है। ओके, सो द आंसर इज बी। नाउ कैलकुलेट M1 फ्रॉम द फॉलोइंग मनी एग्रीगेट्स। M1 क्या होता है? करेंसी विद पब्लिक, अदर डिपॉजिट्स विद RBI, डिमांड डिपॉजिट्स, टाइम डिपॉजिट्स नहीं होते। तो इट इज़ 502738 7016 423 120। So this is 4 5 6 एक आ गया था, ठीक है, 10 2 1 3 9 9 3 2 8 6 4 ओके 8 6 7, हाँ ये 7 हो जाएगा, 8 7 4। बैंक अर्न अ प्रॉफिट ऑन द डिफरेंस बिटवीन। बैंक का प्रॉफिट क्या होता है? बैंक लोन्स देता है, उस पे जो इंटरेस्ट मिलता है, और जो डिपॉजिट का इंटरेस्ट होता है वो बैंक्स को देना पड़ता है, डी वाला देना पड़ता है। और ये इंटरेस्ट रेट जो बैंक लोन्स पे चार्ज करता है, तो लोन से जो चार्ज करता है माइनस डिपॉजिट का डिफरेंस, इंटरेस्ट चार्ज टू डिपॉजिटर्स एंड इंटरेस्ट चार्ज ऑन लोन्स एंड इंटरेस्ट पेड ऑन डिपॉजिट्स, अंडर विच यूनियन दे हैव टू फॉलो अ कॉमन मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिजिकल पॉलिसी। ओके, परफेक्ट कॉम्पिटिशन नहीं होता। कस्टम यूनियन में सिर्फ ट्रेड के बेसिस पे होता है। इकोनॉमिक यूनियन इज द आंसर। ठीक है, अब न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी वॉज अनाउंस्ड ऑन 91 में हुआ था, बाकी कोई ऑप्शन में नहीं है, तो इट इज़ 24 जुलाई 1991। ये 1990 था, 1995 था। मेजर ऑफ फिजिकल रिफॉर्म्स इंक्लूड ensuring better tax compliance, encouraging private sector participation. Okay, they can reduce the taxes to encourage the private sector as well. Reduction in subsidies and abolition of unnecessary subsidies. So this would make sense. Okay, measures of, we are not talking about expansion or something. So tax compliance would be there, this would be there, this would be there, so all of these. Okay. As per economic survey, the contribution of service sector is. So if you are guessing between these two, then it makes sense. 45 तो नहीं होगा, so it is close to 55 or 60% only. So I'm not sure about this. You can just Google this out. Okay, but if I want to guess, I would guess it as 25 is for industry, 17 is for agriculture, which is getting close to 14 15 to 40, so it might be 57.5 only. So I'll go with 60. Okay, quantitative, this is easing. Quantitative easing is the common name for, so this is the, so quantitative easing, this is a concept that you must have studied. This is related to reducing the interest rate to increase the money supply in the economy. Okay. Parallel economy emerges because of tax avoidance and tax evasion, because they don't want to pay the tax, so that is why there is a parallel or a black economy that takes place. Tax avoidance and tax evasion both might be the correct answer to this. Now, which among the following shows a correct descending order of liquidity of M1 M2 M3? Descending order मतलब सबसे पहले कौन सबसे ज़्यादा लिक्विड है? सबसे ज़्यादा लिक्विड, फिर कम, फिर देन द नेक्स्ट. तो वी नो M1 इज द मोस्ट लिक्विड, देन M2, देन M3. Descending order of liquidity, so it would be M1 M2 M3. Which of the following is not a money market instrument? ट्रेजरी बिल होता है, कमर्शियल पेपर होता है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट होता है. इक्विटी शेयर इज नॉट फॉर अ मनी मार्केट. सो नॉट है तो ये सारे हट गए. ट्रेजरी बिल्स भी डिपेंड्स कितने ईयर का है. इफ इट इज लेस देन 1 ईयर तो शॉर्ट रन वाला हो जाता है. ठीक है. डंपिंग रेफर्स टू,
Reducing tariff, nahi. Sale of goods abroad at a lower price below their cost and price in their home market. So if you know this, if you have heard about dumping, so it's very easy. Which of the following theories suggests that firms seek to penetrate new markets over time? For that firm seeks to penetrate new markets. Theory of competitive advantage नहीं है. Imperfect market theory नहीं है. Product market theory. Okay, so if you want to guess, it should be B or D, but I would prefer to guess it with go with B. ठीक है. Who propounded the price equalization theorem? ठीक है, you might not know this, but this is Paul Samuelson. On all points of rectangular hyperbola demand curve, this is the elasticity of demand is. So this is a special case when total revenue along this remains same throughout. So elasticity is equal to unity in this case. Now, imposition of GST shifts the supply curve to the left, to the right. Now, as the tax is being imposed, so the cost to the supplier has increased. So they will, this is the supply, this is demand, this is price, quantity. Now the supply has, the tax is being imposed, so the cost has increased, so the supply curve would shift towards the left. Now, normative economics is also known as, it cannot be positive economics, it is prescriptive of or applied economics. Okay, I'm not sure about which one it is. So yeah, implicit cost added in, it is added in, explicit cost is added in accounting, but implicit cost is added in cost, in economic cost. Implicit cost is, so if I'm talking about the cost, so if I am a business person, हमने cost का और question किया था, I'll go back there as well. Implicit cost is, अगर मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, मैंने लेबर वेबर हायर किया, सब कुछ हायर किया, बट जो मैं अपनी सर्विस दे रहा हूँ उस चीज़ की कॉस्ट को क्या कहते हैं? जो मैं अपनी सर्विस दे रहा हूँ वो भी एक कॉस्ट होती है, क्योंकि मैं अगर अपने बिजनेस में नहीं कर रहा होता तो मैं कोई जॉब कर रहा होता जिसमें मैं पैसा अर्न कर रखा होता, तो वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाती है मेरी. द WTO वॉज एस्टैब्लिश टू इम्प्लीमेंट द फाइनल एक्ट राउंड ऑफ, दिस इज उरुग्वे. ठीक है, इसमें उरुग्वे वाला ही ज़्यादा फेमस है. एक दोहा एग्रीमेंट्स भी है, वो भी देख लेना. द गवर्नमेंट अकाउंट्स आर मेंटेन नेमली इन मेंटेन्ड दिस इज शुड बी मेनली, दिस इज ईजी. कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में होते हैं, कंटिजेंसी में भी होते हैं, बट मेनली लिखा हुआ है तो इट शुड बी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. बाय कन्वेंशन इन इलेक्शन ईयर द बजट में बी प्रेजेंटेड. नाउ दिस इज एन इलेक्शन ईयर, सो दिस कैन बी आस्क्ड. इलेक्शन ईयर में क्या होता है, क्योंकि शुरू के सपोज 4 महीने, मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में रिजल्ट आ रहा है सपोज, तो उससे पहले वो एक अलग से बजट निकालती है. वो पूरे साल का इसलिए निकालते हैं क्योंकि अगर पॉलिटिकल पार्टी चेंज होगी तो वो बजट फिर से निकालेगी, तो वो पहले सिर्फ इलेक्शन से पहले तक का निकालते हैं. एंड सेकेंड बजट निकलता है जब नई पार्टी आती है. अगर सेम आ गई तो वो फिर से निकालती है, अगर नहीं आई तो वो अपना बजट अलग से निकालती है. तो बेसिकली 2 बार होता है. ठीक है. डेफिसिट फाइनेंसिंग इंक्लूड्स इशूज़ ऑफ न्यू करेंसी बाय द गवर्नमेंट नहीं करती इशू नई करेंसी. विड्रॉवल ऑफ पास्ट एक्यूमुलेटेड कैश, ये भी नहीं होता. तो ये एक, इनमें से एक भी हट गया तो ऑल ऑफ द अबव भी नहीं होता. तो डेफिसिट फाइनेंसिंग वो होता है जब when the government itself spend on the goods and services is making expenditure, और उसको फाइनेंस कैसे करते हैं? RBI को बोल के कि RBI तुम नोट छाप दो टू फाइनेंस दिस. प्राइमरी डेफिसिट मीन्स फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट. ठीक है, दिस इज ईजी, फेयरली ईजी. द मोस्ट इंपॉर्टेंट एम ऑफ फिजिकल पॉलिसी इन अ डेवलपिंग कंट्री इज, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी तो तब आएगी जब पहले डेवलपमेंट होगी. ठीक है, फर्स्ट डेवलपिंग कंट्रीज का गोल ही डेवलपमेंट है. विच इकोनॉमिक इंडिकेटर इज रिक्वायर्ड टू प्रिडिक्ट द टर्निंग पॉइंट ऑफ बिजनेस साइकिल? तो लीडिंग इंडिकेटर भी होगा क्योंकि वो बताएगा कि एकदम से बढ़ रहे हैं या नहीं. लैगिंग इंडिकेटर भी बता सकते हैं कि पीछे वाले से क्या सिस्टम चल रहा है, क्या नहीं चल रहा. और हाँ, कोइंसिडेंट नहीं, बट आई विल गो विद लीडिंग इंडिकेटर. ओके, एंड देयर वाज अ क्वेश्चन रिलेटेड टू कॉस्ट एज वेल. I'll just see where it is.
was related to some implicit cost or something. Chamberlain export. Okay, dash is an example of implicit cost. So wages of the labor are explicit, charges for electricity are explicit, payment for raw material are also explicit, interest on own money capital is implicit cost. Okay, so do make this change, that for 52 the answer is C. Okay, now the thing is, since this is done, now you need to check what all questions were easy for you and how many easy questions you have marked right. And then there might be some questions where you have guessed. Now you need to see how your guess game is. Like, is it the case that if you're guessing on 20, you're getting 10 right, which is a very decent score. Even on 20, if you're getting 6 or 7 right, that is still fine if the cutoff is, if the negative marks are 1/4. But if you're guessing on 20 and you are getting 3-4 right, so then on an average you will be getting the score in the negative only. So I would suggest just analyze the paper by your own, and then only you will get to know about how you are supposed to approach this paper. So this paper was for CA foundation mock test, and we have extensively covered this. I hope this was some help to you in approaching how you are supposed to approach the exams. All the best for your exam.